Good morning, my dear student. Uh, in our previous class, we were discussing about the difference between metals and non-metals. We had discussed many properties of metals and non-metal, physical properties, on the basis of which they can be distinguished from one another. Okay? Now, in current lecture, we are going to discuss some more properties of metals and non-metal on the basis of which we can distinguish them separately. So the property which we are going to discuss today is that sonorosity, sonority, once again I repeat, sonority. Metals are sonorous. It is called that metals are sonorous. S-O-N-O-R-O-U-S, sonorous. Sonorous means, meaning of sonorous is that metals, when beaten with something, like if you take, suppose we are having some metal, that is, it may be iron or tin or copper, anything, any metal. When they are beaten, okay, when they are beaten with something, some object, understood, they produces ringing sound. मेटल्स को जब भी किसी वस्तु से उसको पीटा जाता है ना, when they are beaten with some object, they produces ringing sound, एक ringing sound produce होता है. And this property of metal are called sonority. Therefore it is called that metals are sonorous. Almost all metals are sonorous. It means they produce a sound, ringing sound, when beaten with some object. Clear? And due to this property of sonority, metals are generally used for making bells. You might have observed the bell of your school. Understood? When it is beaten with a hammer, a wooden hammer or something, it produces sound. So, due to this sonority, due to this property, metals are used for making bells. Another use of metals due to this property of sonority is that musical instrument like sitar, violin, all these musical instruments have wires. No? They are fitted with some wires. When they are plucked, they produce sound of different types. Clear? So these wires are made of metal. So metals are used in musical instrument. Metal wires are used in musical instrument also due to the property of sonority. Clear? Whereas non-metals are not sonorous. They are not sonorous at all, because when beaten with something, they do not produce a sound, like phosphorus, sulfur, carbon. When they are beaten, when they are hammered, they breaks because they are brittle, but they do not produce sound. Clear? So this is the property sonority on the basis of which metal and non-metal can be distinguished from one another. Now the property which we are going to discuss of metals and non-metals is luster. Once again I repeat, now the property which we are going to discuss is luster, metallic luster. What does it mean, luster? Luster means, in Hindi you can say chamak. All the metals have a specific shining surface. Almost all metals which are new,
Like if you take a piece of aluminum or iron which is not corroded, understood, or which are not rusted, तो ऐसा आयरन जिसमें जंग ना लगा हो, एक नया आयरन का टुकड़ा कर लेते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, एनी मेटल, you will observe that their surface has some sign, उसके सतह पर एक चमक होता है, धात्विक चमक, it's called metallic luster. Clear? So all metals, almost all metals have a shining surface. This is called metallic luster. See, metals are lustrous. Metals are lustrous. Lustrous means that is they have shining surface. Now, due to this property, they are used to see silver metal. Silver metal is best reflector of light. In physics, reflection of light chapter, you might have studied that how reflection takes place, or how mirrors, plane mirrors or any mirrors are made. Mirrors बनाया कैसे जाता है? For that purpose, we simply take a piece. We take a piece of plain glass sheet. एक प्लेन ग्लास शीट लिया था. प्लेन ग्लास शीट मीन्स ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पर आप देख सकते हैं. क्लियर? लाइट कैन पास थ्रू दिस ग्लास प्लेट. नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट मिरर, अब इसको मिरर बनाने के लिए जिस पर आप अपना इमेज देख सकते हो, इसके लिए इस प्लेन ग्लास शीट के दूसरे किसी एक फेस पर सिल्वर पाउडर, ठीक है, सिल्वर पाउडर का एक पतला सा लेयर डिपोजिट किया जाता है, एंड देन इट इज प्रोटेक्टेड बाय रेड पेंट. ठीक है, मिरर बनाने का सिंपल सा वे है कि एक प्लेन ग्लास शीट जिसको मिरर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो दैट इट कैन फॉर्म इमेज. क्योंकि प्लेन ग्लास शीट कैन नॉट फॉर्म इमेज, रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू इट. तो इसको मिरर बनाने के लिए इसके एक फेस पर, किसी एक फेस पर सिल्वर का पाउडर डिपोजिट किया जाता है. देन इट इज प्रोटेक्टेड, दैट लेयर ऑफ सिल्वर पाउडर इज प्रोटेक्टेड बाय रेड पेंट. ठीक है, नाउ इट विल बिकम ए मिरर. अब ये मिरर हो जाएगा क्योंकि इससे रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो भी रे ऑफ लाइट इस पर पड़ेगा वो इसके पार नहीं जा सकता. इट विल रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड फॉर्मिंग द इमेज. क्लियर? This is the reason why silver metal is only used in making mirrors. मिरर बनाने के लिए सिल्वर मेटल को ही क्यों यूज किया जाता है? कारण यह है कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट का एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है सिल्वर मेटल. इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल 99% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. सिल्वर मेटल के सरफेस पर जो भी लाइट पड़ता है उसका 99% लाइट एनर्जी क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है. दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स. क्लियर? अनदर सी, शाइनिंग अपीयर्स ऑफ मेटल मेक देम यूजफुल इन ज्वेलरी मेकिंग. आपने ऑब्जर्व किया होगा जो भी ज्वेलरी हम पहनते हैं, दैट इज वेदर इट इज रिंग और ब्रासलेट और चेन, वट एवर इट इज, दीज आर मेड ऑफ this gold, silver, etc. because of its shining surface, shining property, because its luster, इसके चमक के कारण इन्हें यूज किया जाता है for making jewelry. Clear? On the other hand, non-metals are not lustrous. They do not have shining surface. They do not have shine at all. उनके surface जो है वो चमकदार नहीं होते. Instead they are dull. ठीक है, चमक नहीं होना, डल, धुंधला होता है. ठीक है, बट वन एक्सेप्शन इज देयर, एंड प्लीज पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. बिफोर ऑल्सो आई हैड टोल्ड दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द एक्सेप्शन. हियर इज एक्सेप्शन. आयोडीन अ नॉन मेटल. आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज मेटेलिक लस्टर. इसमें चमक होता है. ठीक है, तो ओनली नॉन मेटल विच हैज मेटेलिक लस्टर इज आयोडीन.